ठीक है। सो हम आज स्टैंडर्ड 2A पढ़ेंगे। सो 2A के अंदर एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बेसिकली सॉरी 2A के ना थ्री पार्ट्स हैं। पहला ये है जिसके अंदर हम समझेंगे कि 2A में क्या क्या चीज़ें हैं। देन आता है हमारा रिकमेंडेड प्रोसीजर्स, क्या क्या रिकमेंडेशन है कि 2A जो वायलेशन है, मतलब उसका वायलेशन ना हो, जो कि मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है। इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स बनी रहे, सो उसके अंदर ये एक सब पार्ट है मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। सो उसके रिकमेंडेड प्रोसीजर है। देन उसका एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड है जिसके अंदर एग्जाम्पल्स है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि इसको हम 3 वीडियोस में डिवाइड कर देंगे। 3 अलग अलग वीडियोस में इसका हम डिस्क्रिप्शन लाइक इसको डिवाइड करके हम स्टडी करेंगे। सो पहले हम 2A मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए फिर स्टार्ट करें हम अपना वीडियो। सो इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स, राइट। सो गिव मी अ सेकेंड। इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स में हमारा पहला पार्ट आता है मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। सो इसके अंदर क्या है, कैंडिडेट्स members who possess material non-public information that could affect the value of investment must not act or cause others to act on the information. So कोई भी अगर नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है कि उसके ऊपर हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई एक्ट नहीं करना है, कोई ट्रेड नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, मतलब वो अगर आप एक्सपोज हुए हो तो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं करना है किसी फॉर्म में, या किसी को बताना नहीं है क्योंकि कोई दूसरा बंदा उसको यूज़ करके, तो बेसिकली ये क्लाइंट्स के लिए ख़राब चीज़ हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन का यूज़ नहीं करना है, ओके, जब तक वो बाहर पब्लिक मार्केट में आउट ना हो जाए। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं इसका गाइडेंस। हाइलाइट्स क्या हैं, व्हाट इज़ मटेरियल इंफॉर्मेशन उसके बारे में बात करेंगे, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में बात करेंगे, मोज़ेक थ्योरी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, सोशल मीडिया यूजिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स उसके बारे में बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट्स में क्या है वो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं ट्रेडिंग और इंड्यूसिंग अदर्स टू ट्रेड ऑन मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन erodes confidence in capital markets, institutions and investment professionals by supporting the idea that those with inside information and special access can take unfair advantage of general investing public. तो जिनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है या स्पेशल एक्सेस है तो वो अनफेयर एडवांटेज उठा लेंगे, तो जो कि गलत है। जो नॉर्मल आम जनता है उनके लिए तो वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है। सो दिस विल hinder the integrity of capital markets. Although trading on inside information may lead to short term profits, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स बना देगा, ठीक है, in long run individuals and profession as a whole suffer from such trading. These actions have caused and will continue to cause investors to avoid capital markets because the markets are perceived to be rigged. तो यही माना जाएगा कि रिग्ड हैं जो लोग, जिनके पास एक्सेस है, जिनके पास बड़े बड़े कनेक्शन हैं, वही लोग हमेशा जीतेंगे, हमेशा पैसा बनाएंगे, ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ना हो इसलिए हमें इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स बनानी पड़ेगी और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को कम से कम, मतलब उसको आइसोलेटेड रखना है और यूज़ नहीं करना। इंसिडेंट इन फेवर ऑफ नॉलेजेबल इंसाइडर, ठीक है, when the investing public avoids capital markets, the markets and the capital allocation become less efficient and less supportive of strong vibrant economies. ठीक है, उसका कॉन्सिक्वेंस ये है, लेस एफिशिएंट लेस सपोर्टिव हो जाएगा अगर लोग कम पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, देन स्टैंडर्ड 2A promotes maintains a high level of confidence in market integrity, which is one of the foundations of investment profession. Okay,
The prohibition on using the information goes beyond the direct buying and selling of individual securities or bonds. Members and candidates must not use material non-public information to influence investment action related to derivatives, mutual funds, other investments. Any trading based on material non-public information constitutes a violation of Standard 2A. The expansion of financial products and increasing interconnectivity of financial market globally have resulted in new potential opportunities for trading on material non-public information. ठीक है, अब हम आगे आते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होती है. Information is material if its disclosure would probably have an impact on price of security, or if reasonable investors would want to know the information before making an investment decision. In other words, information is material if it would significantly alter the total mix of information currently available about a security in such a way that price of security would be affected. The specificity of information, the extent of its difference from public information, and its nature, that its reliability are key factors in determining whether a particular piece of information fits the definition of material. For example, material information may include but is not limited to information on the following. ठीक है, ये क्या है, इसमें अर्निंग्स हो सकती हैं. ठीक है, मर्जर एक्विजिशन, टेंडर ऑफर, जॉइंट वेंचर्स, चेंजेस इन एसेट्स, एसेट क्वालिटी, कंपनी के एसेट में कोई चेंजेस है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कुछ बना रहा है या उसका डिस्क्लोजर हुआ है, या प्रोसेसेस कोई नई डिस्कवरी करी है, फार्मास्यूटिकल में यूजली होता है, न्यू लाइसेंस, पेटेंट्स, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स, रेगुलेटरी अप्रूवल, रिजेक्शन कुछ आता है. ओके, देन डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग कस्टमर और सप्लायर, कोई नया कस्टमर विन हुआ है, या कोई सप्लायर अब हमारे पास नहीं है, या फिर वो छोड़ के भाग गया है. चेंजेस इन मैनेजमेंट, कोई CFO छोड़ के चला गया, या CEO चेंज हो गया, रिज़ाइन कर दिया किसी ने. चेंज इन ऑडिटर इन नोटिफिकेशन और फैक्ट दैट इश्यूअर में नो लॉन्गर रिलाई ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट और क्वालिफाइड ओपिनियन. ऑडिटर ने जो ऑडिटर था वो छोड़ के चला गया है, उसने रिज़ाइन कर दिया है, या उसने नोटिफाई करा है क्वालिफाइड ओपिनियन. इवेंट्स रिगार्डिंग द इशूड सिक्योरिटीज, डिफ़ॉल्ट्स ऑन सीनियर सिक्योरिटी, आप या तो कंपनी ने डिफ़ॉल्ट करा है सीनियर सिक्योरिटी, कॉल्स फॉर सिक्योरिटी रिडेम्पशन, परचेज री-परचेज प्लान्स, मतलब आप अपनी सिक्योरिटीज़ को वापस बाय कर रहे हैं, या फिर स्टॉक स्प्लिट्स हो गए, चेंज डिविडेंड में कोई चेंजेस हैं, सिक्योरिटी होल्डर की जो राइट्स है उसमें कोई चेंज है. ठीक है, पब्लिक प्राइवेट सेल्स ऑफ एडिशनल सिक्योरिटी, बैंकरप्सी हो गई कंपनी में, या फिर उसकी सब्सिडरी कोई बैंकरप्ट हो गई है. सिग्निफिकेंट लीगल कोई डिस्प्यूट आ गया है, कोई गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट है, या कुछ भी टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट है. गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं, GDP ग्रोथ फोरकास्ट एंड ऑल जो रिलीज़ होते हैं. सो ये भी मटीरियल पब्लिक इंफॉर्मेशन है. कोई बड़ा ऑर्डर हमने जीता है, लाइक ऑर्डर्स फॉर लार्ज ट्रेड बिफोर दे आर एग्जीक्यूटेड, मतलब कोई ऑर्डर, एक्चुअली दिस ऑर्डर इज़ मार्केट ऑर्डर, वो जो स्टॉक मार्केट ऑर्डर. सो कोई स्टॉक मार्केट ऑर्डर डील होने वाला है, वो पहले पता चल जाए, तो दैट्स अ मटीरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन. न्यू और चेंजिंग इक्विटी और डेट रेटिंग इशूड बाय थर्ड पार्टी. ठीक है, सेल साइड रिकमेंडेशन है, वो पहले से पता है आपको. ओके, सो ये यूजली तब होता है जब फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है और रिसर्च, सेल साइड रिसर्च एनालिस्ट है. In addition to the substance and specificity of the information, the source or relative reliability of information also determines materiality. Less reliable a source, the less likely the information provided would be considered material. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका जो सोर्स है वो अगर रिलायबल ही नहीं है तो वो मटेरियल भी उतना नहीं माना जाएगा. लेस लाइकली द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड वुड बी कंसिडर्ड मटेरियल. अगर रिलायबल सोर्स नहीं है, कोई ऐसी बस अपना ओपिनियन कर रहा है, दैट्स नॉट अ मटेरियल इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कॉर्पोरेट इनसाइडर
regarding a significant new contract for a company is likely to be material. कोई नया contract आ रहा है तो material. Whereas an assumption based on speculation by a competitor about the same contract is likely to be less reliable. कोई अगर speculation कर रहा है like कोई contract by a competitor is therefore not material. ये material नहीं है. अगर कोई कंपनी ने contract जीता है उसके competitor भी जीतने की संभावना है, so this is not a material. This is just a एक opinion है, एक assumption है, एक speculation है. It's not a material information. Additionally, information about trials of new drug trial जैसे pharmaceutical companies and all होता है. So product or service under development for qualified personnel involved in trials is likely to be material. ठीक है, तो कोई क्वालिफाइड पर्सनल है और वो इसके बारे में बता रहा है, मतलब कि कोई न्यू ड्रग ट्रायल हो रहा है या फिर सर्विस है अंडर डेवलपमेंट है, तो वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है. वेयर एज एजुकेटेड कंजेक्चर बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स नॉट कनेक्टेड टू ट्रायल्स इज अनलाइकली टू बी मटेरियल. कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो उससे कनेक्टेड नहीं है लेकिन उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मटेरियल नहीं है. Also, the more ambiguous the effect of information on price, the less material. So, ये हमें पहले थोड़ा सा समझते हैं. ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन हैविंग डबल मीनिंग, मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हमें उसका इंटरप्रिटेशन मतलब मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, तो वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो लेस मटेरियल इन्फॉर्मेशन में मानी जाएगी. ठीक है, कोई अगर एक ऐसी चीज़ पता चली है लेकिन उसका कुछ अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं सबके नज़रिए में, सो वो लेस मटेरियल इन्फॉर्मेशन है. इफ़ इट इज़ अनक्लियर वेदर and to what extent the information will affect the price of security, the information may not be considered material. ठीक है, the passage of time may also render information that was once important immaterial. Okay, with time कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी इमटेरियल हो जाती है पैसेज ऑफ टाइम के साथ. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन. फिर हमारे पास आता है मोज़ेक थ्योरी, फिर सोशल मीडिया एंड देन इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट्स. ठीक है, सो अब हम आ रहे हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टू अ नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन. ठीक है, information is non-public until it has been disseminated or is available to marketplace in general. Disseminated can be defined as made known. For example, a company report of profits that is posted on the internet, distributed wide through a press release or accompanied by a filing has been effectively disseminated to the marketplace. Members and candidates must have reasonable expectation that people have received the information before it can be considered public. So members and candidates must have reasonable expectation that people have received the information before it can be considered public. It is not necessary. It is not necessary, however, to wait for the slowest method of delivery. Once the information is disseminated to the market, it is public information that is no longer covered by this standard. It is not necessary, however, to wait for slowest method of delivery. Once the information is disseminated to market, it is public information that is no longer covered by this standard.
ठीक है, इसको फिर से पढ़ते हैं. मेंबर्स एंड कैंडिडेट मस्ट हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशन दैट पीपल हैव रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन बिफोर इट कैन बी कंसिडर्ड पब्लिक. Members candidates must have reasonable expectation that people have received the information before it can be considered public. मतलब मेंबर कैंडिडेट्स को ये भी समझना है कि लोगों को मिल गया है इसका इंफॉर्मेशन, तभी उसको हम पब्लिक समझेंगे. इट इज़ नॉट नेसेसरी हाउएवर टू वेट फॉर द स्लोएस्ट मेथड ऑफ डिलीवरी. नेसेसरी नहीं है कि हम वेट करें अगर डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्लो. Once the information is disseminated to the market, it is public information that is no longer covered by this standard. Okay, so ये important point है कि जैसे ही एक नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है तो ये स्टैंडर्ड में उसका स्कोप ही नहीं है. ठीक है, मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स मस्ट बी पर्टिकुलरली अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज सिलेक्टिवली डिस्क्लोज्ड बाय कॉर्पोरेशंस टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट्स एंड अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स. Information that is made available to analysts remains non-public until it is made available to investors in general. Corporations that disclose information on a limited basis create the potential for insider trading violations. Issues of selective disclosure often arise when a corporate insider provides material information to analysts in briefing or a conference call. ठीक है, इधर बोल रहे हैं कि अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज सिलेक्टिवली डिस्क्लोज कॉर्पोरेशन स्मॉल ग्रुप, ये नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है. अगर एनालिस्ट को ही वो डिस्क्लोज करी गई है वो नॉन पब्लिक है. Corporation that disclose information on a limited basis create potential for insider trading violations. Issues of selective disclosure often arise when a corporate insider provides material information to analysts in a briefing. ठीक है, कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन किसी एनालिस्ट फोरम में या फिर किसी ब्रीफिंग में कॉन्फ्रेंस कॉल पे दी जाती है. सो ये मटेरियल इंफॉर्मेशन होगी और नॉन पब्लिक होगी. Analysts must be aware that the disclosure made to a room full of analysts does not necessarily make the disclosed information public. Analysts should also be alert to the possibility that they are selectively receiving the material non-public information when a company provides them with guidance or interpretation of such publicly available information. Okay, so तो हमें ये समझना होगा कि कुछ कॉर्पोरेशंस हैं जो एक मतलब ग्रुप ऑफ एनालिस्ट हो गए और वहाँ पे डिस्क्लोज करता है इंफॉर्मेशन, सो वो नॉन पब्लिक ही माना जाएगा. दैट्स नॉट अ पब्लिक. अगर वो डिस्क्लोज वहाँ कर रहे हैं दैट डजंट मीन कि वो पब्लिक हो गई, क्योंकि आप लिमिटेड एक छोटा सा सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल में आप वो डिस्क्लोज कर रहे हैं. ठीक है, एनालिस्ट मस्ट बी अवेयर दैट a disclosure made to a room full of analysts does not necessarily make the disclosed information public. Analysts should also be alert to the possibility that they are selectively receiving material non-public information when a company provides them with guidance and interpretation of such public available information as financial statements or regulatory filings. A member or candidate may use insider information provided legitimately by, ठीक है, यूज कर सकते हो insider information provided legitimately by the source company for specific purpose of conducting due diligence according to the business agreement between the parties, such activities as merger, loan, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकती हैं. लेकिन इसको फिर से पढ़ते हैं. एक बार आप मन में खुद से पढ़ो.
देखो, अगर आपका पर्पस क्या है, उस इंफॉर्मेशन से आप पर्पस क्या बनाते हो। अगर आप उसको किसी मर्जर एक्टिविटी, लोन अंडर राइटिंग, क्रेडिट रेटिंग या फिर ऑफरिंग एंगेजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो, देन इट इज़ फाइन। बट अगर आप प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आपने वो इंफॉर्मेशन बाहर किसी को बताई या फिर उस पर ट्रेडिंग करी उस इंफॉर्मेशन के ऊपर, या दूसरों को ट्रेडिंग करवाई उस इंफॉर्मेशन पर, सिक्योरिटीज ऑफ द फर्म पर, देन वो एक कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है हमें। अब हम म्यूजिक थ्योरी पे आते हैं, फिर हमारा बचेगा सोशल मीडिया एंड यूजिंग इंडस्ट्री और ये। ठीक है, अब म्यूजिक थ्योरी क्या होती है। म्यूजिक थ्योरी एक, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेवल 1 से ही ये मतलब इम्पॉर्टेंट रहा है, इस पे क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। Financial analyst gathers and interprets large quantities of information from many sources. किसी आप एनालिसिस करते हो तो बहुत सारी सप्लायर्स, वेंडर्स, इन सब लोगों से बात करते हो, वहाँ से कहीं से बहुत जगहों से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। द एनालिस्ट में यूज सिग्निफिकेंट कंक्लूजन्स derived फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ पब्लिक एंड नॉन मटीरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, या तो पब्लिक इंफॉर्मेशन जो पब्लिक में है, जो नॉन पब्लिक में है वो, लेकिन वो नॉन मटीरियल होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉन मटीरियल वो। ठीक है, और मटीरियल क्या क्या होगा उसके बारे में हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं वीडियो में, कि ये सारी चीज़ें मटीरियल है। ये सारी चीज़ें मटीरियल हैं, ये जितनी भी। ठीक है, इसके अलावा जो भी है वो नॉन मटीरियल है। ठीक है, ये भी आपको समझना है बात को, इसके अलावा जो भी है वो नॉन मटीरियल है। ठीक है, सो as the basis for investment recommendations and decisions, even if those conclusions would have been material inside information had they been communicated directly to analysts by the company. Under the mosaic theory, financial analysts are free to act on this collection or a mosaic of information without risking violation. सो आप पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड नॉन मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन दोनों को यूज़ करके अगर कोई जजमेंट, कोई ओपिनियन बनाते हैं तो दैट इज़ फाइन, दैट इज़ नॉट अ वायलेशन। ठीक है, the practice of financial analysis depends on free flow of information for the fair and efficient operation of capital markets. Analysts and investors must have greatest amount of information possible to facilitate making well-informed investment decision about how and where to invest capital. इसको मन में दोबारा पढ़िए, अच्छी लाइन है थोड़ी सी। Accurate and timely intelligible communication is essential if analysts and investors are to obtain the data needed to make informed decisions about how and where to invest capital. These disclosures must go beyond the information mandated by the reporting requirements of the securities laws and should include specific business information about items used to guide companies' future growth, such as new product, capital projects, and competitive environment. Analysts seek and use such information to compare and contrast investment alternatives. Analysts seek and use such information to compare and contrast investment alternatives. Much of the information used by analysts comes directly from companies. Analysts often receive such information through contracts
with corporate insiders, contacts, sorry. Analyst often receive such information through contact with corporate insiders, especially investor relations staff, financial officers. Information may be disseminated in the form of press releases, through oral representations by company executives in analyst meetings or conference calls during analyst visits to company premises. In seeking to develop the most accurate and complete picture of company, analysts should also reach beyond contacts with companies themselves and collect information from other sources such as customers, contractors, suppliers, and the company's competitors. Analysts in the business of formulating Analysts are in the business of formulating opinions and insights that are not obvious to the general investing public about attractiveness of the particular securities. In the course of their work, analysts actively seek out corporate information not generally not known to the market for the express purpose of analyzing that information, forming an opinion on its significance and informing their clients, who can be expected to trade on basis of recommendation. Analysis initiatives to discover and analyze information and communicate their findings to their clients significantly enhance market efficiency, thus benefiting all investors. Accordingly, evaluations of 2A will not result when a perspective analysis reaches a conclusion about the corporate action or event through an analysis of public information and the items of non-material non-public. So ये भी ध्यान रखना है हमें, अगर वो पब्लिक इंफॉर्मेशन नॉन मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन दोनों को मर्ज करके कोई एक ओपिनियन बनाता है या फिर कोई कंक्लूजन आता है, सो दैट इज़ नॉट अ वायलेशन. Investment professionals should note, however, that although analysts are free to use music information in their research reports, they should save and document all their research. जो भी म्यूज़िक थ्योरी के अंदर उनका ओपिनियन कंक्लूजन या फिर जो भी उनका व्यू पॉइंट है, उसके लिए जो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने यूज़ करी उसको स्टोर करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए, और उसका हमारा रिकॉर्ड रिटेंशन एक अलग से स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 5C, उसमें आ जाएगा. एविडेंस ऑफ द एनालिस्ट नॉलेज ऑफ पब्लिक और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ corporation strengthens the assertion that the analyst reached his or her conclusion solely through appropriate method rather than through the use of material non-public information. सोशल मीडिया पे आते हैं. The continuing advancement in technology allows members and candidates industry at large to exchange information at rate not previously available. It is important for investment professionals to understand the implication of using information from internet, social media platform, because all such information may not actually be considered public. Some social media platforms require membership in specific groups in order to access the published content. एक और ध्यान रखना है कि जो मेंबर्स कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप्स जहाँ पे मेंबरशिप लिमिटेड है, शुड वेरीफाई दैट मटेरियल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम दीज सोर्सेज. कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है जो इन सोर्सेज से ऑब्टेन करी गई है कैन ऑल्सो बी एक्सेस फ्रॉम सोर्स दैट वुड बी कंसिडर अवेलेबल टू द पब्लिक. Members and candidates may use social media platforms to communicate with clients or investors.
may use social media platforms to communicate with the clients and investors without conflicting with this standard as long as information reaches all clients is open to। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज मेंबर कैंडिडेट यूज सोशल मीडिया में यूज़ कर सकते हैं टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स विदाउट कॉन्फ्लिक्टिंग विद दिस स्टैंडर्ड एज लॉन्ग एज द इंफॉर्मेशन रीचेस ऑल क्लाइंट्स और इज ओपन टू इन्वेस्टिंग पब्लिक। The use of these platforms would be comparable with other traditional forms of communication, such as emails and press releases. Members and candidates, as required by Standard 1A, should also complete all appropriate regulatory filings related to information distributed through a social media platform. So, knowledge of the law के अंडर ये है कि जो भी regulatory filings हैं related to information distributed through social media platform, ठीक है। Using industry experts, ठीक है। अब हमारी ये बात आती है कि हमें जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको कब कब यूज़ करना है, उनका कब से उनका गाइडेंस लेना एंड ऑल। सो क्या वो वायलेशन है या नहीं है, क्या वो स्टैंडर्ड में हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या वो स्टैंडर्ड में स्कोप में कवर होता है नहीं होता, तो उसके बारे में हम एक बार बात करते हैं, उसके बारे में हम ये सब रीड करेंगे। Increased demand for insight for understanding the complexities of some industries has led to an expansion of engagement with outside experts. As the level of engagement increased, new businesses formed to connect analysts and investors with individuals have specialized knowledge of their industry, technology or pharmaceutical, जैसे कि these networks offer investors the opportunity to reach beyond their usual business circles to speak with experts regarding economic condition, industry trends, technical issues related to specific products and services. So members or candidates may provide compensation to individuals for their insight without violating this standard. However, members and candidates are ultimately responsible for ensuring that they are not requesting or acting on confidential information received from external experts, which is in violation of security regulation and laws or duties to others. As the recent string of insider trading cases displayed, some experts are willing to provide confidential protected information for the right incentive. अगर आप पैसा खूब दोगे तो आपको these people will give you insider trading informations and confidential protected information. So वो फिर आपका मेंबर कैंडिडेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि आपने ऐसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करा अपने ओपिनियन बनाने के लिए, तो then it is a violation under 2A, which is using material non-public information. So firms connecting experts with members and candidates often require both parties to sign agreements. So एक agreement sign होना चाहिए concerning the disclosure of material non-public information, even with protections from such compliance practice. If an expert provides material non-public information, members and candidates would be prohibited from taking investment actions. Members and candidates would be prohibited from taking investment action on associated firm until the information became publicly known to the market. अगर इनकेस आप ऐसे डिस्कशन में आपको एक मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन मिल भी जाती है तो उस पर आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, इन्वेस्टमेंट एक्शन नहीं लेना है, सिक्योरिटी बाय या सेल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो आप वायलेट नहीं कर रहे। लेकिन इनकेस आपने कुछ किया तो देन देयर इज अ वायलेशन अंडर दिस स्टैंडर्ड।
सो ये बेसिकली कहाँ पॉइंट आउट करता है, जहाँ आप देखोगे आजकल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स कॉन्फ्रेंस और समिट्स करते हैं, वहाँ पे बात करते हैं, लेकिन अगर कोई मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात होती है, देन यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दोज इन्फॉर्मेशन एंड यू डोंट हैव टू एक्ट ऑन दैट इन्फॉर्मेशन. You don't have to make any investment action on that information associated with that firm. Okay. Now investment research reports जो होती हैं, जो हम लिखते हैं basically, जो research analyst हैं, so when a particularly well-known or respected analyst issues a report or makes changes to his or her recommendation, that information alone may have an effect on market and thus may be considered material. सो कई बार क्या होता है कि देर आर वेल नोन रिस्पेक्टेड एनालिस्ट, जैसे कि नीलेश शाह एंड ऑल, जो कि इंडियन मार्केट्स में है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और वो अगर कोई टिप्पणी करते हैं या अपने किसी स्टॉक के बारे में, या फिर सौरभ मुखर्जी हैं अगर वो कुछ बोलते हैं, तो कई बार होता है कि एक मार्केट सेंटिमेंट ख़राब या अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव. सो उससे मटीरियल इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक प्राइजेस पे. ठीक है. तो उसको हम मटेरियल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं. Theoretically understood, such report would have to be made public at the time it was distributed to clients, and the analyst is not a company insider, however does not have access to inside information. Presumably, the analyst created the report from information available to public music theory, and by using his or her expertise to interpret the information, the analyst's hard work paid for by the client generated the conclusions. Simply because the public in general would find the conclusion material does not require that analyst make his or her work public. Investors who are not clients of analyst can either do the work themselves or become clients of the analyst to gain access to the analyst expertise. So ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है. Simply because the public in general would find the conclusions material does not require the analyst to make his or her work public. वो अपना काम सिर्फ इतना उनको करना है कि वो जो रिस्पेक्टेड बड़े एनालिस्ट हैं, वो अपने इन्वेस्टर्स हुआ नॉट, मतलब बेसिकली वो अपने क्लाइंट्स को ही वो पब्लिक करें, बाहर करने की ज़रूरत नहीं है. सो इन्वेस्टर्स हु आर नॉट क्लाइंट्स ऑफ एनालिस्ट कैन ईदर डू द वर्क देमसेल्फ एंड बिकम क्लाइंट्स ऑफ द एनालिस्ट टू गेन एक्सेस टू द एनालिस्ट एक्सपर्टीज. सो ये बात है. सो अगर दोबारा पढ़ना है पढ़ सकते हैं इसको. सो व्हेन अ पर्टिकुलर वेल नोन और रिस्पेक्टेड एनालिस्ट इशूज अ रिपोर्ट और मेक्स चेंजेस टू हिज और हर रिकमेंडेशन, द इंफॉर्मेशन अलोन may have effect on market and thus may considered material. Theoretically understood, 2a such a report would have to be made public at the time it was distributed to clients. The analyst is not a company insider, however does not have access to inside information. So presumably the analyst created the report from information available to the public music theory, and by using his or her expertise to interpret the information, and the analyst hard work paid for by the client generated the conclusions. ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं. रिकमेंडेड प्रोसीजर्स जो हैं हम उसको से अलग वीडियो में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, और एग्जाम्पल्स को हम एक अलग वीडियो में करेंगे जो कि थर्ड वीडियो हो जाएगी 2 की.